Hello my dear student, in this class we will briefly discuss about the three laws on the basic of Newton's law of motion. In previous class we have already discussed the Newton's law of motion, that means three laws. So in this class we discuss one by one about the first law, second law and third law. So first Newton's first law of motion. In previous class you already study about the Newton's first law of motion, and the statement of the first law is first law says that first law states that in every body continue its state of rest or of motion along a straight line without the help of an external force or until or unless an external force impress on it. That is, तमे प्रीवियस क्लास रे ही पढ़ी थिला जे फर्स्ट लॉ कहिथिला जे एवरीबॉडी कंटीन्यूअस स्टेट जस्ट सब बॉडी निजर स्टेट रे ही रहबे. स्टेट मींस जदि रेस्ट रे अछन बोले रेस्ट रे रहबे और जदि मोशन रे अछन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जदि मोशन यूनिफॉर्म मोशन रे अछन यूनिफॉर्म मोशन रे ही रहबे. केते बिल तो until or unless an external force impress on it, जे पर्यंत तार ऊपर किछि एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड बा इंप्रेस हे नथिबो से पर्यंत जे कोनोसी बॉडी निजर जगह रहबे तांकर निजर अवस्था रे ही रहबे. जदि रेस्ट रे रहबे रेस्ट रे रहबे आ मोशन रे रहबे मोशन रे रहबे. आ मु काली एग्जांपल भी देथिली जदि आज भी जदि एग्जांपल देबो से फुटबॉल के नियो जे दिस फुटबॉल इज ए रेस्ट कंडीशन and until or unless an external force impress on this football cannot or can't able to change its position. That means हम force apply नहीं करवा जाए ये फुटबॉल का रेस्ट कंडीशन में ही रहबा. और जदि फुटबॉल का जदि मोशन कंडीशन में रहउची ले मोशन कंडीशन में ही रहबा. जते दिन तक ई फुटबॉल में फोर्स अप्लाई नहीं करछ ये फोर्स अप्लाई करले रेस्ट टू मोशन ही जीवो और फोर्स अप्लाई करबो बोले मोशन कंडीशन में फोर्स अप्लाई करले फुटबॉल में रहबो तो मोशन से रेस्ट जीवो. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहि जे पर्यंत जदि गोटे बॉडी रे फोर्स अप्लाई नहीं हिथिबो से पर्यंत से बॉडीटा निजर कंडीशन रे रहबो. जदि रेस्ट रे रहबो बोले रेस्ट रे रहबो मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो. दैट मींस एवरीबॉडी continuous their state. Rest means rest or motion means motion until or unless an external force impress on that body. So this is Newton's first law, and this Newton's first law give the two important points. First important point is define the qualitative definition of force. First important point is define the qualitative definition of force. Then Newton's first law is first give the qualitative definition of force. What is the meaning of force that can be given by the Newton's first law? So Newton's first law के देखो, Newton's first law को एनालाइज करो जैसे फोर्स रो डेफिनेशन कहिछि कि नहीं निजे जानि पारबो. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहिछि जे पर्यंत गोटे बॉडी रे फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस हेनी से पर्यंत से बॉडी रेस्ट रे रहबा मोशन रे रहबा. तो जदि हम फर्स्ट लॉ के वाइस वर्सा करबा मींस उल्टे देबा जदि फोर्स पड़ले कोन हो. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहिछि जे फोर्स एक्सर्टेड न हेबा जाए बॉडी रेस्ट रे रहबा मोशन रे रहबा. तो जदि फोर्स एक्सर्टेड हेले कोन हो
फोर्स एक्सर्टेड हेले बॉडी तार पोजीशन चेंज करबो जदि रेस्ट रे अछि बोले मोशन ही जीवो आ मोशन रे अछि बोले रेस्ट ही जीवो और फुटबॉल रेस्ट रे अछि जदि हमें फोर्स पकेमा मोशन ही जीवो और फुटबॉल मोशन रे अछि जदि हमें फोर्स पकेमा ले रेस्ट ही जीवो तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जस्ट टिके में उल्टे देवा वाइस वर्सा कर देवा मैं से फोर्स रो डेफिनेशन करिछि फोर्स रो डेफिनेशन बाहरी जीवा बिकॉज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रो कमी जाई जे फोर्स एक्सर्टेड न हेबा जाय बॉडी रेस्ट रे रहबो बोले रेस्ट रे रहबो मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो किंतु फोर्स एक्सर्टेड हेले कोन हो बॉडी तार पोजीशन चेंज करबो सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को जस्ट टिके तमे वाइस वर्सा करके जदि भाबिबो उल्टिया करके जदि भाबिबो that is give the definition of force. So lekho the H for Newton's first law of motion everybody continue their is level which are state of rest or of motion around straightly. That is if we think alternate or vice versa, then if there is an external force impress on the body, then it change its position. क्लियरली बुझानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहिছে जे सब बॉडी तुम कंटीन्यूअसली स्टेट रेस्ट रे अछि रेस्ट रे रहबे मोशन रे अछि मोशन रे रहबे क्लियरली कहिছে किंतु केते बिंदु रहबे विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इन में से देखो इन विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एटी के में से देखो विदाउट help on external force. So if external force impress on the body, then it changes position. हमने बहुत बार देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहिছে जे एवरीबॉडी तमर जदी रेस्ट रहबो बोले रेस्ट रहबो और मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो केते भी जाई तो विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़वा जाए रहबो तो ताके जदि हम अल्टरनेट भाबिबो जदि एक्सटर्नल फोर्स पड़वा बोले कोन हो द बॉडी चेंजेस पोजीशन काजे एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़वा जाए बॉडी रेस्ट रे रहबो बोले रेस्ट रे रहबो मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो सेरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहिছে तो जदि ताके हम अल्टरनेट भाबमा जदि एक्सटर्नल फोर्स पड़ले कोन हो बॉडी चेंजेस पोजीशन सो फोर्स रो डेफिनेशन तो क्लियरली बुझी पारलो जे फोर्स होचे जदि गोटे बॉडी ऊपर फोर्स पड़वा दैट बॉडी चेंजेस पोजीशन और चेंजेस स्टेट क्लियरली बुझला सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रो हमें का पाइलो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स दैट इज force is a external agency which capable to change the state of the body so न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रू हमें कान पाइमा क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स तो किछि नहीं फर्स्ट लॉ जेते बेले फोर्स जे पर्यंत फोर्स एक्सर्टेड नहीं थिबो से पर्यंत बॉडी रेस्ट रे रहबो मोशन रे रहबो तो फर्स्ट लॉ को ठीक जस्ट अल्टरनेट कर देबो जदि फोर्स एक्सर्टेड हेले कोन हो बॉडी तार पोजीशन चेंज करबो बिकॉज़ फोर्स एक्सर्टेड न हेबा जे बॉडी रेस्ट रे रहबो ले रेस्ट रे रहबो
मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो किंतु फोर्स एक्सर्टेड हला पर बॉडीटा चेंज हेबो का पोजीशन का चेंज हेबो तो फोर्स गुटे एक्सटर्नल एजेंट जहाँ कि बॉडी पोजीशन चेंज हेबो सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टिके जस्ट में भाइस वर्सा जदी थिंकिंग करबो बोले दैट इज गिव द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स एबा गुटे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गुटे जिनिस कहै छै इनर्शिया विषय it is define the inertia property of body न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रो आउटे काम जे define the inertia property of body so what is the property what is the definition of inertia what do you mean by inertia means जे बॉडीटा निजर पोजीशन रे ही सब बेले थिबो विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेटा तो कहै छी जे फोर्स नहीं पड़वा जाए बॉडी निजर पोजीशन रे रहबो आ फोर्स नहीं पड़वा जाए बॉडी जदी निजर पोजीशन रे रहबो जदी रेस्ट थिबो बोले रेस्ट रे रहबो मोशन रे थिबो बोले मोशन रे रहबो ले बॉडी रो से प्रॉपर्टी के ही हम कहबा इनर्शिया तार माने इनर्शिया इज द it is a property inertia is the property of body by virtue of which it is unable to change its state means maybe rest, maybe motion or maybe a specific direction maybe direction भी change कर पारबा without the help of an external force तमाने इनर्शिया वाले किछि नहीं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ही कहै छै इनर्शिया जे फोर्स एक्सर्टेड न होबा जाय बॉडी रेस्ट रे रहबो बोले रेस्ट रे रहबो मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो आ बॉडी रो से प्रॉपर्टी के ही कहै जायसी इनर्शिया लेखा जाय छै द इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट इज अनएबल टू चेंज इट्स स्टेट दैट मींस रेस्ट रे रहबो बोले रेस्ट रे रहबो मोशन रे रहबो बोले मोशन रे रहबो डायरेक्शन बोले स्पेसिफिक डायरेक्शन रे जदी अछि बॉडीटा बोले स्पेसिफिक डायरेक्शन रे रहबो केते मिलता without the help of an external force जे पर्यंत किछि फोर्स तार ऊपर एक्सर्टेड हेनी so that is called inertia and inertia is divided into three types जदि बॉडी इन रेस्ट रे रहबो until or unless an external force impress on a body the body continuously is at rest condition जदि बॉडी इन रेस्ट कंडीशन नहीं रहबो खाली रेस्ट रे रहबो that inertia of property of body is said to be inertia of rest inertia of जदि बॉडी मूव करूची बोले मूविंग कंडीशन रे रहबो सेते बेले हम ताके कहम इनर्शिया ऑफ मोशन जदि गोटे बॉडी गोटे डायरेक्शन में ही अछि सब बेले गोटे डायरेक्शन में ही रहबो बोले सेते बेले हम ताके कहम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किंतु बॉडी निजर पोजीशन में रहबो केते बेले जेते बेले जाय ता ऊपर किछि एक्सटर्नल फोर्स इंप्रेस हेनु तो फास्ट हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट जदि की डेफिनेशन जानी चाहिए तो मैं आराम से जानी पारबो inertia of rest so the property of body by virtue of which is unable to change its position which is unable to change its state of rest without the help of an external force then it is called as inertia of rest so let it go the property of body by virtue of which it is unable to change its state of rest is called inertia of rest हाँ state of rest कैसे मिल सकता है बॉडी पोजीशन चेंज नहीं हुए without the help of
and external force is called inertia of rest. Inertia of rest. So clearly बुझलो किसी नई definition ना, the body by virtue of which is unable to change its position जहाँ जेहेतु आम inertia of rest पढ़ुचु तो change its state of rest. जदि तार रेस्ट पोजिशन के जदि चेंज ही नहीं करवा विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज फोर्स नहीं पड़ले ही बॉडी तार रेस्ट कंडीशन में रहबा, फोर्स पड़ले तो चेंज ही जबा पोजिशन. सो विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स एंड जेहेतु बॉडी रेस्ट कंडीशन होचे, सो दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एग्जांपल देखो तुम जदि गोटे बस रे बसिछ, व्हेन द बस स्टार्टिंग टू मूविंग सडनली, जेतेबेले से बसटा तुम मूविंग सडनली तुम मूविंग हवा कंडीशन के पड़े आसला तो तुम पचाड़ के जर्क मार्च बैकवर्ड जर्क हेसी तुम पचाड़ के घुंचीस, बिकॉज योर बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन एंड यू वांट टू इज एट रेस्ट कंडीशन. तो व्हेन द बस इज स्टार्ट मूविंग, योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग विद द मूविंग बस और मोशन कंडीशन विद द मूविंग बस, बट योर अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज टिल रेस्ट, so you get backward jump. तमाने बस जेतेबेले मूविंग करबा तुम लोअर पार्ट टा बस सहित मूविंग कंडीशन रे पळे आसबा, किंतु तुम अपर पार्ट टा भी से पर्यंत भी रेस्ट कंडीशन रे थिबो, सेति पई बस आकु मूविंग करले तुम पछाड़ के जर्क मारस, बिकॉज तुम रेस्ट कंडीशन रे रहबा के चाहबो, से रीजन के तुम पछाड़ के जर्क मार. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. So example उड़े लिखी दी थियो, inertia of rest example उड़े a person sitting in a bus get backward jerk when the bus starting move तमाने जेतेबेले बसटा मूविंग करबा स्टार्टिंग करबा सडनली स्टार्टिंग करबा, देन यू गेट बैकवर्ड जर्क. कज लिखि दियो केन रीजन का जे इटा होची, तो बैकवर्ड जर्क केन रीजन का जे जोछ ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो से कज टिके लिखि दियो जे व्हाइल द बस स्टार्ट to moving suddenly the person, the lower part of his body means persons, his body is moving with the moving condition with the bus, but his upper part of his body till now is at rest due to property of inertia. So he gets backward jerk. That is देखो लिखा जाइए कौन जेते बेले तुम बसटा मूविंग कंडीशन के पळे आसला देखो बस रे तुम बसिछ, जेते बेले बसटा मूविंग कंडीशन के पळे आसला, तुम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग कंडीशन विथ द मूविंग बस जेते बेले पळे आसला मूविंग कंडीशन के,
the lower part of the body is moving condition of the moving bus, but your upper part till now rest, because before the bus start moving you is at rest condition, तुम rest condition में थिलो, तो you are at rest condition. तो जेतेबेले तुम बस टा मूविंग कला, the lower part of the body is moving with moving bus, but the upper part of body of the person till now rest, so the person get backward jump. So this is the property of inertia. This is the property of inertia of rest, and it is example. Next हमें देखना inertia of motion. कितने में लिखा? Inertia of motion. Inertia of motion देखो. The property देखो. Inertia of motion means body रो जो motion condition अच्छे that motion condition of the body is unable to change due to the inertia property of motion. अब कहते बिल्कुल है motion condition में body रहो without the help of an external force. जेते बिल्कुल तार ऊपर किसी force exerted है नहीं थी तो मन लगे थी force exerted न हेबा जाए जे कौन सी body तार position में रहो जदि rest रे रहो बल ताको हमें कमा inertia of rest जदि motion में रहो बल inertia of motion किंतु force exerted न हेबा जाए तार position रे ही रहो. So inertia of motion, the property of body, the property of body by virtue of which it is unable to change its state of uniform motion along a straight line. क्लियरली बुझलो जे तार मोशन यदि चेंज ही नहीं होबा सेता माने त कमा इनर्शिया मोशन. अब केते बेले चेंज मोशन हेबनी विदाउट the help of an external force. So तामाने बॉडी जदि without the help of an external force जदि बॉडी मूविंग करूचे बोले मूविंग ही करूथिबो, and that property of body is said to be inertia of motion. अब एग्जांपल से बस रही नेबा एबे हमें मूविंग बस के रहबा सपोज धरो इने बस टा मूविंग करूचे सपोज बस टा आके मूविंग कंडीशन रे अछि सेने तुम बसिछ you are also moving condition, you are also in moving condition along with the bus, but when the bus is stopped जेतेबेले तुम बस डायरेक्ट स्टॉप हे जीवो और ब्रेक मारबा जेतेबेले तुम बस ता तुम ड्राइवर ता ब्रेक मारबा स्टॉप हे जीवो तो स्टॉप होई गले कोन हेबो तुम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी संगे संग तुम बस जेतु स्टॉप हैला से भी स्टॉप हो जीवो किंतु तुम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हेड एबे जाई भी मूविंग कंडीशन रे रहबो जेतु से आगो बिफोर से मूविंग कंडीशन रे थिला. सो जेतेबेले बस टा स्टॉप ही जीवा संगे संग तुम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप विथ द स्टॉप ऑफ द बस, but your lower part of the body stop with the stop of the bus, but your upper part tilts now moving condition. तो जेतु तुम अपर पार्ट टा मूविंग कंडीशन में एबे जाय अछि बस स्टॉप हैला परे भी तुम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जेतु एबे जाय मूविंग कंडीशन रे अछि से रीजन रो कथि तमे फॉरवर्ड रखबो आके जीवो बस ब्रेक मारला पर तुम आके जीवो. सो आके जाउ छ काहे जे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बिकॉज़ तुम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बस स्टॉप हैला परे भी मोशन कंडीशन रे रहबा को चाहबो सेति पे से आके जीवो. So, सेना को एग्जांपल हिसाब से लिखि दियो. A person sitting in a moving bus get forward
forward jerk when the bus is suddenly stop. बस जिते सडनली स्टॉप हो तुम बॉडीटा आगे पड़ेगा कज लिखि दियो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन कज लिखि दियो कज when the bus is suddenly stop the lower part of the person the lower part of his body is stop with the stop of the bus যেতে বেলে bus stop হয়ে যাবে লেখা দিয়েছে when the body is suddenly তো when the bus is suddenly stop যেতে বেলে bus টা suddenly stop হয়ে যাব সেতে বেলে the lower part of his body portion ର body টা also stop হয়ে যাব with the stop of the bus কিন্তু upper part but his upper part of body his means portion के बुझे मने रखिथिबो his upper part of body till now moving condition due to upper part of the body एबे जा देखो बस जेते स्टॉप हो जीवो ता लोअर पार्ट बस सहित स्टॉप हो जीवो किंतु तार अपर पार्ट ता टिल नाउ मूविंग कंडीशन बस स्टॉप हला पर भी तार अपर पार्ट मूविंग कंडीशन में रहउची से रीजन का जैसे आके जो हमारा मूविंग कंडीशन में रहउची का ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का जैसे मूविंग कंडीशन रहबा के चाहउची सो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टिल नाउ मूविंग कंडीशन ड्यू टू property of inertia of motion due to property of inertia of motion clearly बुझलो सरला so the person gets forward jerk when the bus suddenly stop सरला क्लियरली बुझलो बुझाबा नहीं ना जे देखो पर्सन ता तुम बस सहित मूविंग कंडीशन में थिला तो जेते बेले बस हठात स्टॉप हो गला सेते बेले हठात दैट लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज स्टॉप विथ द बस बट अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी टिल नाउ मूविंग कंडीशन सो ही गेट फॉरवर्ड jerk due to property of inertia of motion moving condition रे रहउची का काजे property of inertia of motion हो एरा लो property of inertia of motion एरा में देखो property of inertia of direction property of inertia of direction inertia of direction so inertia of direction देखो समान the property by virtue of which the property of body by virtue of which it is unable to change its direction ever without the help of an external force because force नहीं पड़वा जाए ही से निज डायरेक्शन नहीं रहबा so the property समान डेफिनेशन अछि तो निजे एनालिसिस करो property of body by virtue of which it is unable to change its direction. कहते will the direction change नहीं हुए without the help of an external force. And that property is called inertia of direction.
तार माने से बॉडीटा निज डायरेक्शन में ही रहबा केते बिल जाए विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स आ डायरेक्शन निज डायरेक्शन में रहउची सेति पय तार प्रॉपर्टी इनर्शिया की क्वाल होची इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जदि मोशन में रहला इनर्शिया ऑफ मोशन जदि से रेस्ट कंडीशन में रहबा के चाहबा पले इनर्शिया ऑफ रेस्ट किंतु रहबा केते बेले विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स हो देखो बे एग्जांपल सब धरो तमार ई लोड टिके बेंड हेचे तो बसटा ई डायरेक्शन रे जाउचे बसटा ई मूविंग कंडीशन रे जाउचे पर्सन रो डायरेक्शन देखो सीधा डायरेक्शन रे रहउचे पर्सन का तो जेते बेले ई बसटा टर्निंग हेबा बसटा जेते बेले टर्निंग हेबा से पर्सन निज डायरेक्शन के आसबा काजे निज डायरेक्शन के आसबा काजे से पर्सन काना आउटवर्ड जर्क आउटवर्ड जर्क बाहर के तमर जर्क मारबा जेते बेले बस टर्निंग हेबा से पर्सन बाहर के जर्क मारबा बिकॉज से पर्सन रो इनिशियल डायरेक्शन रहउचे दिस डायरेक्शन रे जाउचे किंतु बस जेते बेले टर्निंग होउचे बस जेते बेले टर्निंग होउचे से निजर इनिशियल डायरेक्शन के जीवा काजे बस जेते बेले टर्निंग हेबा से तार इनिशियल डायरेक्शन पाके जीवा काजे आउटवर्ड जर्क हेबा सो ता निजर डायरेक्शन रे रहबा काजे पर्सन ता आउटवर्ड जर्क हेबा क्लियरली बुझलो इनु जणा पड़छे देखो ई पर्सन मूविंग बस सहित ई पर्सन रो डायरेक्शन समान थिला किंतु जेते बेले बस टा टर्निंग कला सेते बेले निज डायरेक्शन के जीवा पाई ई पर्सन टा आउटवर्ड जर्क हैला सो दैट इज indicate the inertia of direction of the body so इटा लिखि दियो the person sitting in a bus get outward jerk कहाँ जाएगा when the bus is suddenly get sharp turning जेतेबेले से बस टर्निंग कला से बेले से पर्सन आउटवर्ड जर्क कला रीजन होची इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन निज डायरेक्शन में रहबा का जे पर्सन ता बस जेतेबेले टर्निंग हैला से निज डायरेक्शन में रहबा का जे इरा तो तार इनिशियल डायरेक्शन निज डायरेक्शन में रहबा पाई बस जेतेबेले टर्निंग हैला ई पर्सन ता आउटवर्ड जर्क हैला सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कॉज लिखि दियो कॉज का देखो when the bus get sharp turning the direction of person is also changed but due to the inertia property of direction the person get outward jerk सबला এটা বুঝি থিব নেক্সট আমরা न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रो एनालिसिस बुझलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहिचे फोर्स नहीं पड़बा जे बॉडी निजर रेस्ट कंडीशन रे रहबा ले रेस्ट रे रहबा और यूनिफॉर्म मोशन रे रहबा ले यूनिफॉर्म मोशन रे रहबा तो फोर्स पड़ले कना हबा बॉडी पोजीशन चेंज हबा सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फोर्स रो डेफिनेशन कहला जे फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच इज कैपेबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी देन आउरे जिनिसटा कहला जे फोर्स न पड़बा जाए बॉडी निजर पोजीशन रे रहबा रेस्ट रे जदि अच्छे रेस्ट रहबा मोशन रे अच्छे मोशन रे रहबा जदि गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन रे अच्छे बोले गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन रे रहबा आ से प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टाके कह जायसी इनर्शिया जदि बॉडी रेस्ट ने अच्छे रेस्ट ने रहबा इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन ने अच्छे मोशन ने रहबा इनर्शिया ऑफ मोशन आ डायरेक्ट गोटे स्पेसिफिक डायरेक्शन रे अच्छे बोले डायरेक्शन रे रहबा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किंतु केते बिल जाय रहबा विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन two parts. One is the qualitative definition of force and another is inertia property of the body. Then we discuss Newton's second law of motion. So Newton's second law of motion देखिए
न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी तुम पढ़ी मुझे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखि दूचे दिस योर स्टेट दैट द फोर्स exerted on a body is directly proportional to the rate of change of momentum of the body along with the direction of force आम काली जस्ट कही जे आम गोटे बॉडी ऊपर जेते फोर्स अप्लाई करमा दैट बॉडी मूव्स विथ दैट अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज mv दैट सिंबल होचे p is the symbol of the momentum जे फोर्स जेते पकामा बॉडी का सेते मास सहित गति करबा मास सहित गति करबा के हम कहूछु मोमेंटम आई कहलिसी मास सहित गति करबा तमे जेते अधिका फोर्स पकामा बॉडी का सेते मोमेंटम हैबा अब केन डायरेक्शन में हैबा along with the direction of force जेन डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई कलो से डायरेक्शन में बॉडी मोमेंटम हैबा तो फोर्स जेते पकेबो बॉडी रो मोमेंटम भी सेते अधिका हेबा एंड दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ लिखा जाय छे द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी गोटे बॉडी ऊपर जेन फोर्स पड़ला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली रो मीनिंग का डायरेक्टली रो मीनिंग होचे फोर्स जेते अधिका पड़बा मोमेंटम भी सेते अधिका हेबा सेटा रिप्रेजेंट्स करते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली फोर्स जेते अधिका पड़बा मोमेंटम भी सेते अधिका हेबा अब केन डायरेक्शन में हेबा with the direction of force or direction में ही है so इधर जब हमें mathematically represent करना mathematically represent करबो એટલે force is directly proportional to the rate of change of momentum delta p by delta t or we can be write dp by dt the rate of change of momentum तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट मींस होची टाइम बा मोमेंटम रो हार तो माने फोर्स जेते अधिका पकेमा मोमेंटम रो हार भी सेते अधिका चेंज हेबा सो ए प्रोपोर्शनल टू d by dt of instead of momentum we can be use mv because the formula of momentum is mv suppose this body having a mass m and velocity v then momentum of this body is mv so instead of p or momentum it can be used mv that implies f proportional to m is constant then dv by dt that implies we can be write f proportional to m a dv by dt जाके हम लिख पारमा एक्सेलरेशन ताउ के देखो जे न्यूटन्स सेकंड लॉ रो स्टेटमेंट होची जे फोर्स जेते पड़बा बॉडी रो मोमेंटम सेते चेंज होबा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तमे लिखलो dp upon dt रेट आसा बोले टाइम आसा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज dp upon dt and instead of v we can be use mv and we know that the body changes momentum but it cannot change its mass body जेते स्पीड रे जाओ तार वेलोसिटी में भी चेंज होबा किंतु मास चेंज नहीं होए तो तमे जानिछो जेंटा चेंज नहीं होय दैट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट डिफरेंशिएट रो आके पड़ेबा सो कांस्टेंट तमर बाहरी वाला तो रहला dv upon dt and we know that dv upon dt is acceleration so force proportional ma and force is equal to k ma so the formula of force is equal to mass into acceleration so Newton's second law give the quantitative value of force or how magnitude of the force that magnitude of force is equal to mass into acceleration so लिखि दबो जे Newton's second law give magnitude of force Newton's second law तम फोर्स रो मैग्नीट्यूड कहछे तो क्लियरली बुझलो एना हम परीक्षा रे पछरे सिलागबो थाउ एतकी थैंक यू।